यानी फोकस कलर। तो ये फोकस कलर वाली प्रॉपर्टी शायद बाहर आती है। डेकोरेशन में ही फोकस कलर करके अपन क्या कर देंगे, कलर्स डॉट वाइट। इसको क्लिक करेंगे, ये वाइट कलर की दिखनी चाहिए, बट ये थोड़ी ज़्यादा शायद अपन ने वो दे दी, तो इसको 130 कर देते हैं। ओके, इससे ओवरफ्लो ना हो यूआई। ओके, तो ये बेसिकली अपनी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन गई जिसके अंदर अपन कुछ भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। ओके, स्टाइलिंग अभी मैं इतना नहीं दे रही क्योंकि वो आप लोग भी दे सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, एकदम बेसिक बेसिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अपन ध्यान देते हैं अभी फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को अपन यहाँ पे कंट्रोलर पास करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो अपन ने शुरू में बनाया था लैंग्वेज कंट्रोलर। ओके, और अब अपना जो ऑन प्रेस्ड है, तो यहाँ क्या चाहिए अपन को, जैसे ट्रांसलेट अपन वो करें तो अपना आउटपुट चेंज हो, ठीक है, आउटपुट चेंज हो और वो ट्रांसलेट हो क्या है, तो एक फंक्शन बनाएंगे ट्रांसलेट। इसमें अपन तीन चीज़ें पास करेंगे। पहली तो अपनी ओरिजिन वैल्यू की आ, वो कोड, यानी ओरिजिन वैल्यू डायरेक्ट इंग्लिश तो वो समझेगा नहीं कि इंग्लिश लिखा है, उसका कोड डालना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन ने अलग से मैप बनाया हुआ है। फिर और क्या पास करेंगे अपन, डेस्टिनेशन लैंग्वेज का मैप कोड, ठीक है, डेस्टिनेशन लैंग्वेज। और तीसरा पास करेंगे अपन इनपुट, यानी कि भाई ओरिजिनल लैंग्वेज से चेंज करना है डेस्टिनेशन लैंग्वेज में, बट क्या चेंज करना है ना, तो उसके लिए अपन पास करेंगे इनपुट जो कि अपन को लैंग्वेज कंट्रोलर से मिलेगा, लैंग्वेज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, बात ये कि अपन ने अभी ट्रांसलेट फंक्शन बनाया नहीं है, ठीक है, तो ऊपर जाके अपन ट्रांसलेट फंक्शन बनाते हैं। जैसे आउटपुट के नीचे ही अपन बनाना स्टार्ट करते हैं वॉइड स्लेट, ठीक है, तीन इनपुट लेंगे इसमें, स्ट्रिंग पहले तो सोर्स, फिर स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, एक और स्ट्रिंग जो कि अपनी इनपुट है, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अपन जो फंक्शन जो पैकेज यूज करने वाले हैं वो है अपना गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, तो सर्च करेंगे यहाँ पे ट्रांसलेटर फ्लटर। ओके, तो सबसे पहले ही अपन को रहेगा ये डार्ट पैकेज, इसको कॉपी करना है, वापस आना है, और सबसे लास्ट सेकंड में एक फाइल है pubspec.yml, चलिए मम्मी, ठीक है, तो इसमें ये जो ये है डिपेंडेंसीज करके, ये क्यूपर्टिनो आइकन, इसके यहाँ पे अपन को पेस्ट कर देना है, तो ये अपने आप क्या कर लेगा, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो अपन यूज कर पाएंगे इस पैकेज के। ओके, अब फाइनली आके अपन यहाँ पे यूज करते हैं, अपन यहाँ पे बनाएंगे गूगल ट्रांसलेट। ओके, जिसका नाम देते हैं ट्रांसलेटर इज इक्वल टू, तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट बना लिया उस क्लास का जो अपन को यूज करनी है। ओके, अब जो ट्रांसलेट, ये जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर है,
इसको अपन कॉल करेंगे ट्रांसलेट। ठीक है। अब सोर्स टेक्स्ट क्या है जिसको अपन को कन्वर्ट कराना है, वो है इनपुट। ठीक है। कहाँ से कराना है? फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके। तो अब ये जो फंक्शन है वो कुछ चीज अपन को पास करेगा, यानी कुछ चीज रिटर्न करेगा। ठीक है। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि अपना आउटपुट होगा ट्रांसलेटेड चीजों पे। ठीक है। तो उससे अपन क्या कर लेंगे, आउटपुट में स्टोर कर लेंगे। ओके। आउटपुट। ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये क्या है, अपना फ्यूचर फंक्शन है। यानी कि जब अपन किसी और पैकेज को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, कहीं और जाके फिर अपना काम करता है और फिर रिटर्न करता है, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। इसलिए फ्यूचर फंक्शन है। जब अपन को फ्यूचर फंक्शन यूज करने होते हैं तो अपन एसिंक अवेट का यूज करते हैं। ठीक है। जिससे सामने वाले को अपने जो फंक्शन है इसको तो नहीं पता कि टाइम लगेगा, है ना, वो तो एकदम तुरंत एक्सपेक्ट कर रहा है। तो एसिंक अवेट से क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई टाइम लगेगा, ठीक है, पहले से। तो यहाँ पे अपन एसिंक और अवेट लगा देते हैं। यहाँ पे जो अपना फंक्शन है उसके पैरेंथेसिस के जस्ट बाद अपन एसिंक लगाएंगे और यहाँ अवेट लगाएंगे। और यहाँ पे आउटपुट में डायरेक्ट ऑब्वियसली अपन नहीं करेंगे, यहाँ पे वेर करके इसको बनाएंगे और ट्रांसलेशन करके इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है। अब लिखेंगे सेट स्टेट, क्योंकि अपन को अपडेट भी करना है। अगर अपन नॉर्मली लिख देंगे आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसलेशन डॉट टेक्स्ट, तो पता नहीं चल पाएगा अपने ऐप को कि भाई चेंज हो गई है कोई चीज़, तो हमें यूआई भी चेंज करनी है। ओके, ये हो गया। ओके, तो आई गेस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक बार करके देखते हैं। तो टेक्स्ट भी अपन नॉर्मली ही दिखा रहे हैं। ये वाला जो अपना टेक्स्ट है ना, लास्ट में जो आउटपुट दिखा रहे हैं उसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ वही है अपनी। ओके, तो स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, इसका कलर दे देते हैं वाइट, कलर कलर्स डॉट वाइट। और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 20 पे, तो जैसे आपको दिखेगा वो अलग से। यहाँ पे अगर अब मैं लिख के देखूँ हेलो और इसे ट्रांसलेट करूँ, तो फिलहाल तो ये काम नहीं करता है। एक सेकेंड। देखने के बाद दिक्कत आ रही है। वो अपन ने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करी है, अपन को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। अरे तो दिख नहीं रहा, फिर ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या अपने ड्रॉप डाउन सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसमें अपडेट नहीं हो रही है चीज़ें, क्योंकि अपन ने सेट स्टेट भी यूज़ करा है।
think there is a one parameter missing called value in dropdown. यहाँ पे दूसरे वाले में अपन डेस्टिनेशन को दिखाएंगे तो क्या होगा और यहाँ दिखाएंगे अपन वैल्यू में ओरिजिन लैंग्वेज क्या होगा कोई और दिक्कत है वैल्यू तो उसमें पास कर देंगे Inside your item, there will be the default value, and inside the drop down button, there is a value that you are going to assign. खुशी, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर वो वैल्यू देनी होगी जो आप असाइन करना चाहते हो। यानी यहाँ न्यू वैल्यू या आउटपुट आएगा बट ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी यहाँ पर आइटम में don't know why this is not the whole project is ready but this one blog